14:25 hours right now, and I'm going to create small applications or some of the code snippets which can be very useful. So to begin with, I'm going to create a weather applications, and for the same I'm going to use an API wttr.in wala. Okay, so what I need at this current moment is one library, इनपुट फ्रॉम द यूज़र किस सिटी का चाहिए मुझे वेदर अपडेट, और यूआरएल से मैं एपीआई कॉल करूँगा, यूआरएल क्रिएट करूँगा, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करते हुए आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वेदर रिपोर्ट अराउंड द सिटी इन विच आई एम राइट नाउ. सो लेट अस स्टार्ट कोडिंग. सबसे पहले मैं करता हूँ इम्पोर्ट रिक्वेस्ट, then I am going to take the input for the city which I want weather updates. Okay, so enter city name and here we go. City name हो गया. आप यार URL ब्लॉक क्रिएट करो. URL equals to https wttr.in .format as per the city. Okay, अब URL क्रिएट किया. मैं ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करूँगा. press equals to request dot get URL and print the whatever is the text coming from there. एक्सेप्ट ब्लॉक लगा देता हो ताकि अगर इंटरनेट कनेक्शन या कुछ एरर आ गया तो आई कैन से और शो इट. ओके, सो error occurred, please try again. Okay, so this is the weather app which I am created. Let us try to run it. Enter the city name. I'm going to enter for Vadodara city right now. Let us see what is going to happen. Yo, it's cool. So you can see this is the weather update. I'm going to make it a bit large for you. ये आप जैसे देख सकते हो ये अपडेट आया वडोदरा सिटी का. पैची रेन पॉसिबल, विंड स्पीड एंड एवरीथिंग, मॉर्निंग नून इवनिंग नाइट. सो दिस इज़ द फोरकास्टिंग ऑल्सो. आज कल परसों जैसा भी होगा. ओके, so this is the weather application which is going to give me updates. Let us rename it as weather 1. Okay, क्योंकि मैंने पहले से बना रखा है. I'm working on it. So this was our very first weather application known. So ये हमारा weather app हो गया. I hope you like it. Stay tuned. In the next video I am going to create a good morning message for your WhatsApp. So I hope you like it. See you soon. Bye bye.